आज हम बात करते हैं आईवीएफ है क्या। आईवीएफ मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ हम ग्रॉसली एक बहुत बड़ी साइंस को एक नाम आईवीएफ दे देते हैं। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मींस फर्टिलाइज करना बॉडी से बाहर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नलिनी गुप्ता। मैं डॉक्टर नलिनी गुप्ता हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की, कुछ क्वेश्चंस की जो जनरली हमारे पेशेंट्स पूछते हैं। आज एक हमारे पेशेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमको, लेकिन वो कैमरा पे आना नहीं चाहते, सो हम क्वेश्चन उनसे लेंगे और आंसर मैं आपको करूँगी। हेलो मैम। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मेनली जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था देन IVF क्या है। बेसिकली जनरली लोगों के दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज IVF, सो मे आई नो दैट व्हाट इज IVF एक्चुअली। गुड क्वेश्चन। आज हम बात करते हैं आईवीएफ है क्या। आईवीएफ मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ हम ग्रॉसली एक बहुत बड़ी साइंस को एक नाम आईवीएफ दे देते हैं। आईवीएफ इज पार्ट ऑफ assisted reproductive techniques. It has different modalities according to the aggression required to treat a condition. Exact word IVF is in vitro fertilization. In 1978, it was first coined because the first IVF baby came, Louise Brown, in 1970. She was born in 1978 in Britain. I'm not going to go in details in history because that is a talk for some other day. वो हम कभी फिर बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। इट्स अ नाइस स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बट हम उसके बारे में कभी बात करेंगे। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जिसको हम एक लेमैन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। उसके अंदर उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। कारण को समझाने के लिए एक अलग हमारी बातचीत हो सकती है। इसमें तुम्हारा प्रश्न था कि आईवीएफ क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइज करना बॉडी से बाहर। इसका मतलब हमने एग लिया, अंडा लिया मदर से, स्पर्म लिया फादर से, और उन दोनों को लेके हमने फर्टिलाइज किया, एम्ब्रियो बनाया इन लैब बाहर पेट्री डिश में, सो आउटसाइड द बॉडी। दैट इज IVF। 1978 में दैट वाज द बेसिक IVF, बट जब ये हुआ तो देन वी रियलाइज इट वाज द फर्स्ट IVF वाज सक्सेसफुल फॉर ट्यूबल फैक्टर, जहाँ ट्यूब्स काम नहीं कर रही थी, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन वाज नॉट हैपनिंग इन द कपल बिकॉज द ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड। बट इट डिडंट आंसर फॉर द मेल फैक्टर्स बिकॉज इसके लिए एक nth नंबर ऑफ स्पर्म्स चाहिए थे। बेसिकली इट हेल्प सम फैक्टर्स ऑफ फीमेल causes, not male causes. Then the next gradation came in 1990 when intracytoplasmic sperm injection was successful. That was, the credit goes to Dr. Palermo, and the first fertilization, first baby, ICSI baby was born in 1990, and that revolutionized the assisted reproductive technology, and it became in itself is it showed a huge potential to come and assist the human race. So तुमने मुझसे पूछा कि IVF क्या है। IVF इज पार्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और अब आते हैं IVF, कन्वेंशनल IVF इज जिसके अंदर हमने एक स्पर्म लिए, हमने एक एग लिया, स्पर्म लिए और उसको हमने इंक्यूबेटर में रख दिया। नाउ नेचर विल चूज द स्पर्म विच विल फ्यूज, सो द फर्टिलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर। एंड देन उसका अपग्रेडेशन आया ICSI, जिसके अंदर and in which the specialized machines are used to inseminate or fertilize one egg with one sperm. But in this, the person is the person who is embryologist choosing the sperm. So that is ICSI. ICSI के बाद उसकी upgradation आई IMSI, that is morphological injection of morphologically selected sperm. Because एक ICSI के अंदर जो उसकी मैग्निफिकेशन है वो एक लिमिटेड मैग्निफिकेशन है, जिसके अंदर समटाइम स्पर्म सिलेक्शन में नॉट बी द बेस्ट, सो उसको हमने थोड़ा सा फैसिलिटेट किया विद IMSI, जिसके अंदर उसकी उस सॉफ्टवेयर में उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ गई, सो चूजिंग अ स्पर्म बिकेम लिटिल मोर एक्यूरेट, मोर बेटर। पर इसके अंदर हम मोर्फोलॉजी पे कमेंट कर सकते हैं। उसका एक और टाइप ऑफ ICSI के अंदर जो एक और इम्प्रूवमेंट आया, दैट वाज PICSI. PICSI वाज चूजिंग अ मोर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्पर्म। उसके अंदर देयर आर special dishes with some enzymes
and sperm normal and the different sperms behave little differently in those dishes. So according to that, then you choose the sperm for injection. So that was another upgradation of ICSI. Now one thing again helped, there were some issues which were not helped by this. Say जो एग के अंदर उसकी वॉल थिक है, तो उसके लिए जो किया, that was laser hatching. Initially the hatching was tried by chemical, mechanical, but that was actually quite traumatic, not very successful. But the laser hatching changed the field, and it gives us much better result than this. And उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो even with good embryos, pregnancy didn't happen. Then we wanted more answers, because in IVF, with everything nice embryo, it doesn't give you 100% implantation rate. Then so basically reproductive techniques is a science which is evolving. It's like all medical sciences, it is evolving by the day, and new techniques are coming and new tools are coming. We want answers from them. So the role of PGS for the age-related issues or any genetic issues in the couple came, in which we can send a biopsy and rule out that if there are some limitations in that, अगर उसमें वो हम rule out कर सकते हैं, then healthier embryos can be transferred. So there are various techniques which are there in assisted reproductive techniques, and then when the eggs are finished, then the donor eggs, the egg can be can be donated from a younger woman, or when the sperm is issued, even after TISA, nothing is picked up, then the sperm can come from the sperm bank. So actually, with these all are part of assisted reproductive techniques, and they give a fairly good chance of a couple to become a parent.